Welcome back students. I am your SST teacher Vandana Joshi and you are watching SST June. Students, that today we will see the part 2 of chapter Why Do We Need a Parliament? So student, till now we have studied in our previous video, that is what is parliament and people and their representatives. So today we will study about these two topics. Topic 1, the role of the parliament, and topic 2, who are the people in parliament. So first of all, we will talk about the role of the parliament. So let's start. So students, here are total 3 types of role which are presented by the parliament. So first is to select the national government. Second, to control, guide and inform to the government, and the third is law making. So first of all, we will see the first role of the parliament, that is to select the national government. So let's see. So students, to know more about the first role to select the national government, you can open the page number 36 from your book, first para of to select the national government. Actually student, this is the most important thing from your book which you have to read, that is Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and Lok Sabha. As already I told you in the first video, there are 3 parts of the parliament, that is President, Rajya Sabha and Lok Sabha. So students, after the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. Okay. For a political party to form a government, they must have a majority of elected MPs, because the party which is having the majority, that only be select as a party who is leading the union government. Okay. So since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the member as 272 members or more. So to showing the majority in a party, the party must have 272 seats out of 545. Okay. So the opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party. So जो भी opposition में parties होंगी, वो वही parties होंगी जो कि 272 से कम सीट्स लेके आई होंगी, यानी कि सारी जो पार्टीज़ हैं जो कम सीट्स लेके आई हैं, वो सारी पार्टीज़ किस में आएंगी? अपोजिशंस में आएंगी. ओके. सो द लार्जेस्ट अमंगस्ट these parties is called the opposition party. तो ये सारी पार्टीज क्या कहलाती हैं बच्चों? Opposition party. So many things are there after getting selected as a union government. So many things are there which has to be done in by the national government. So what are the things which are done in the role of the parliament? Let's see. First of all, you know that most important work of parliament is to select the executive. Okay. So what is executive and what is the procedure? Let's see. So students, the most important work of parliament is to select the executive. So a selection of executive, there are the selection of president, the selection of vice president, the selection of the prime minister and the selection of council of members. So the president is the head of the country. He is elected by an electoral poll which consisting of member of both houses of parliament and the members of state legislative assemblies, which are known as Vidhan Sabha. Okay, so the president is elected from a term of 5 years, यानी कि जो president है उससे कितने साल के लिए चुना जा सकता है? 5 years के लिए. Okay, he has the power
to summon, suspend and dissolve the parliament। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है। ओके, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू चुनता है। ओके, एंड प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस। यानी कि जो भी हमारी आर्मी के पार्ट्स हैं, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर भी कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ओके, सो स्टूडेंट, सेकंड नंबर इज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। The vice president is elected by the members of both the houses of parliament as राज्य सभा एंड लोकसभा। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं वो आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होते हैं, जो कि हम राज्यसभा या फिर लोकसभा के नाम से जानते हैं। सो ही इज सेलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ही ऑल्सो एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में भी वर्क कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा। यानी कि जब के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आपके लोकसभा के लीडर होते हैं। द कैबिनेट वर्क्स अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो आपकी कैबिनेट होता है, यानी कि सारे काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, वो सारे किसके गाइडेंस के अंदर काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के। ओके, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। यानी कि प्रधानमंत्री ही, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही आपका जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मेंबर्स। सो व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मेंबर्स? The real power of the executive lies with the PM and his council of ministers। यानी कि जो काउंसिल के मिनिस्टर्स या मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के, उनके और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। यानी कि जो सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है इसका होल सोल जो पावर होती है वो इन दो लोगों के हाथ में होती है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ members। Okay, so what is the second role of our parliament? The second role of our parliament to control, guide and inform to our government। Okay, it is controlling, guiding and informing to our government as well as the executive। The executive is also assisted by an administrative machinery which is called bureaucracy। यानी कि जो हमारी आपकी एग्जीक्यूटिव है उसको भी गाइडेंस किया जाता है, उसको इन्फॉर्म भी किया जाता है और कंट्रोल भी किया जाता है। किसके थ्रू? इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है जिसे कि हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिविल सर्विस। So the parliament while in session being with a question hour, यानी कि जब सेशन चलते हैं पार्लियामेंट के तो उस समय पे वहाँ पे क्वेश्चन आवर्स होते हैं। एंड द क्वेश्चन आवर्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। वाई? बिकॉज द क्वेश्चन आवर्स आर फोकसिंग ऑन द सोशल इश्यूज, laws and regulations, rules and regulation, formation of rules and regulation and many things are there which were asked in the question hour। So question hour भी बहुत ज़्यादा important हमारी पार्लियामेंट का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट वर्क है। ओके, so student, the most important third work of parliament, that is law making। So actually students, the law making by the parliament is the most important thing because all the amendments, law and the rules and regulation formed by the parliament after the discussion with the both houses as Lok Sabha and Rajya Sabha, as well as the third state legislative assembly. So it is also a most important part, and we will discuss about the law making
in our next chapter. So now we will see who are the people in parliament. So students, our next topic of the day is who are the people in parliament. So students, as you know that there are total 545 seats in our parliament. So from where the peoples are getting selected and become the member of parliament. Okay, so parliament now has more and more people from different backgrounds. यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें जो लोग सेलेक्ट होके आते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़. यानी कि आपने देखा होगा यहाँ हमारी पार्लियामेंट में बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ भी होती हैं और बहुत सारे लोग रूरल एरिया से सेलेक्ट होके भी आते हैं. ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ unrepresented are beginning to get elected to parliament. यानी कि जो भी लोग हैं अभी तक जिन्हें हम नहीं जानते थे अब वो लोग भी पार्लियामेंट में इलेक्शंस के थ्रू सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं. ओके, देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज in political participation from the Dalits and backward classes. यानी कि अब सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग नहीं बल्कि दलित्स एंड बैकवर्ड्स भी पार्लियामेंट में मेंबर्स एज ए मेंबर सेलेक्ट होके आते हैं. सो हेयर लुक यू कैन सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ मेनी मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट parties in the different years of elections. Okay, so what we can say here? We can say now our constitution is giving right to all peoples that they can also be get elected and be a member of parliament. यानी कि constitution अब सभी को ये right देता है कि सारे ही लोग जो हैं जो भी eligible होते हैं as a MP, which I told you the eligibilities of the MPs in our last video. So जिनके पास भी वो eligibilities होती हैं वो सारे लोग अब member of parliament बन सकते हैं. Okay, so it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experience separates us, it is important to ensure the communities that have been historically marginalized are given adequate representation. यानी कि अब जो गवर्नमेंट है वो अभी तक जितने लोग मार्जिनलाइज थे या फिर जो भी बैकवर्ड एरिया से आते थे, नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग देम राइट टू बी सेलेक्टेड एज अ लीडर. ओके, सो with this in mind, some seats are reserved in parliament for SCs and STs. So कुछ सीट्स क्या होती हैं SCs और STs के लिए भी रिजर्व होते हैं. SC means scheduled caste and ST means scheduled tribes. Okay, and as I told you earlier that there are total 543 seats plus 2 seats are reserved for the Anglo-Indians. So same in this manner, few seats are reserved for the SCs and STs. So this has been done so that the MPs elected from these constituency will be further with and can represent Dalit and Adivasis interest in parliament. Why the government is providing them facility to be selected? Because as you can see there are many interior areas where no development is there. So to develop these areas and to represent their problems as they are known as the Dalit and Adivasis, they are also having many problems, but these we were not getting earlier due to because their leaders were not there. तो अब उनके leaders जब select होके आते हैं तो अब उनकी परेशानियां भी वो leaders वहाँ पर पे रख सकते हैं. So who are the people in parliament? What we can say, those can be represent the problems of the society and they are elected from the society. They can be the member of parliament. So students, as you can see, the representatives which are in our parliament, they are not sufficient according to our population. So for a conclusion we can say there is a need to be changed
in the system to be getting selected as a member of parliament, and the government is required few things in which the government can select or elect more and more representative. यानी कि अभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भले ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू सेलेक्ट होके आते हों, बट दे आर नॉट सफिशिएंट. एज यू नो दैट देयर इज़ अ पॉलिसी, अ पर्टिकुलर MP can be selected according to the population of particular area. But many times there is a discrimination between the marginalized and the majorities. So for that the government has to make few policies to be getting selected as a MP. यानी कि जो बहुत सारे एरियाज़ में आपने देखा होगा कि जो MPs या MLAs होते हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. सो गवर्नमेंट हैज़ टू मेक फ्यू काइंड ऑफ पॉलिसी टू सपोर्ट the marginalized people. Okay, so students, there are many laws which has been made by our government to secure the rights of the marginalized people. So we will know about these laws and rules and regulation in our upcoming chapters. So students, here your third chapter, the why do we need a parliament, is complete. For more updates and videos, keep watching SST June.